Dear students, today I will deliver a lecture on change of order of integration for BA, BSc, 6th Sem, third year students. Mathematics paper, first real and complex analysis, double and triple integrals, change of order of integration. We know that in case of double integral, if limits of integration are constant, the order of integration can be changed by rearranging the limits of integration. But if the integration is not over a rectangle, either limits of x are functions of y or limits of y are functions of x, then the order of integration can be changed by suitably changing the limits over the region of integration, so that the new limits also cover the whole of region of integration. Example, change the order of integration in integral 0 to infinity 0 to a integral y to a x dx dy x square plus y square, and hence evaluate the same. Solution, let I बराबर है इंटीग्रल 0 to a इंटीग्रल y to a x dx dy बटे x square plus y square. लेट I क्या है, I इक्वल टू इंटीग्रल 0 to a इंटीग्रल y to a x dx dy x square plus y square है. तो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन आर 0 less than equal to y less than equal to a, y less than equal to x less than equal to a. Therefore, region of integration is bounded by the lines y equal to 0, x axis, y equal to a, and x equal to y, x equal to a. ठीक है. Region OAB is the region of integration. Let I बराबर है इंटीग्रल 0 to a इंटीग्रल y to a x dx dy बटे x square plus y square. Limits of integration are 0 less than equal to y less than equal to a, y less than equal to x less than equal to a. Therefore, region of integration is bounded by the lines y equal to 0, x axis, y equal to a, and x equal to y, x equal to a. Region of integration is bounded by the lines y equal to 0, x axis, y equal to a, and x equal to y, x equal to a. Region OAB is the region of integration. In the given order, we have to integrate first with respect to x and then with respect to y. Let I क्या है इंटीग्रल 0 to a इंटीग्रल y to a x dx dy x square plus y square. Limits of integration are 0 less than equal to y less than equal to a, y less than equal to x less than equal to a. Therefore, region of integration is bounded by the lines y equal to 0, x axis, y equal to a, and x equal to y, x equal to a. The x axis, y axis, OB. X equal to 0, y axis, x equal to a, AB line, y equal to a, x equal to y. Let I बराबर है इंटीग्रल 0 to a इंटीग्रल y to a x dx dy
बटे एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। तो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन आर, वाई क्या है 0 to a के बीच में है, और एक्स क्या है y less than equal to x less than equal to a. Therefore region of integration is bounded by the lines y equal to 0, x axis, y equal to a. Region of integration is bounded by the lines y equal to 0, x axis, y equal to a, and x equal to y, x equal to a. Region OAB is the region of integration. OAB क्या है? Region OAB is the region of integration in the given order. We have to integrate first with respect to x and then with respect to y. I बराबर है इंटीग्रल 0 to a इंटीग्रल y to a x dx dy बटे एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र. तो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन आर 0 less than equal to y less than equal to a, y less than equal to x less than equal to a. Therefore region of integration is bounded by the lines y equal to 0, x axis, y equal to a, and x equal to y, x equal to a. Region OAB is the region of integration. In the given order, we have to integrate first with respect to x and then with respect to y. Region OAB is the region of integration. In the given order, we have to integrate first with respect to x and then with respect to y. Region of integration is bounded by the lines y equal to 0, x axis, y equal to a, and x equal to y, x equal to a. x equal to y का मतलब 45 का एंगल एंड x equal to a. ठीक है. Region OAB is the region of integration. OAB, the region of integration. In the given order, we have to integrate first with respect to x and then with respect to y. Region OAB is the region of integration. In the given order, we have to integrate first with respect to x and then with respect to y. After change of order of integration, we have to integrate first with respect to y and then with respect to x. Let I क्या है 0 to a है, change the order of integration है, and hence evaluate. तो limits of integration are 0 less than equal to y less than equal to a, y less than equal to x less than equal to a. Therefore region of integration is bounded by the lines y equal to 0, x axis, y equal to a, by 0 से by 0 a, x equal to y से x equal to a. ठीक. Region OAB is the region of integration. In the given order, we have to integrate first with respect to x and then with respect to y. Okay. Again, change of order of integration, we have to integrate first with respect to y and then with respect to x. तो डिवाइड रीजन OAB इंटू वर्टिकल स्ट्रिप. अब क्या है, वर्टिकल स्ट्रिप में डिवाइड करते हैं. डिवाइड द रीजन OAB. पहले हॉरिजेंटल में था, अब वर्टिकल में कर दिया. ठीक. तो ईच वर्टिकल स्ट्रिप स्टार्ट्स फ्रॉम y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 वर्टिकल स्ट्रिप y इक्वल टू 0 से y इक्वल टू a,
and ends on y equal to x. Y equal to 0 से start है और y equal to x पे end है, y equal to x. Each vertical strip starts from y equal to 0 and ends on line y equal to x. Therefore y की वेरिएशन क्या होगी, 0 less than equal to y less than equal to x. Also this strip varies from x equal to 0 to x equal to a, x equal to 0 to x equal to a. So therefore x की वेरिएशन 0 less than equal to x less than equal to a. After change of order of integration we have I बराबर है इंटीग्रल x इक्वल टू 0 to a y इक्वल टू 0 to x x बटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इंटू डी एक्स. वाई की वेरिएशन क्या 0 to x है और x की वेरिएशन 0 to a. तो इंटीग्रल 0 to a ट्रीटिंग x एज कॉन्स्टेंट y के रिस्पेक्ट में डी वाई बटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स. इंटीग्रल 0 to a x 1y x tan इनवर्स y बटे x y इक्वल टू 0 to x डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to a 1 x से x कट गए टेंजेंट इनवर्स 1 माइनस टेंजेंट इनवर्स 0 इंटू डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रल 0 to a pi by 4 dx pi by 4 x 0 to a pi a by 4. Change the order of integration and evaluate integral 0 to 1 integral 4y to 4 e की power x square dx dy. Here the limits of integration are 0 less than equal to y less than equal to 1 and 4y less than equal to x less than equal to 4. Limits of integration 0 less than equal to y less than equal to 1 4y less than equal to x less than equal to 4. Table for x equal to 4y. ठीक हो गया. Change the order of integration and evaluate integral 0 to 4 0 to 1 integral 4y to 4 e की power x square dx dy. Here the limits of integration are 0 less than equal to y less than equal to 1 and x lies between 4y less than equal to 4. y की वेरिएशन क्या है 0 से 1 है और x की वेरिएशन 4y से 4 तक है. अब टेबल फॉर x इक्वल टू 4y y 0 से 1 लेना है x इक्वल टू 4y. तो जब y 0 होता है x 0 y 1 y 4 है तो x 1 y 1 y 2 है तो 2 y इक्वल टू 1 है तो 4. The region of integration is bounded by lines y equal to 0 x axis y equal to 1 line x equal to 4y and the line x equal to 4. Therefore region OAB is the region of integration. In the given order we have to integrate first with respect to x and then with respect to y. Region OAB
The region of integration is bounded by lines y equal to 0, x-axis y equal to 1, y equal to 0, x-axis y equal to 1, line x equal to 4y, and the lines x equal to 4, x equal to 0, x equal to 4, OAB, y equal to 0, y equal to x by 4, x equal to 0, x equal to 4. The region of integration is bounded by the lines y equal to 0, x-axis, and y equal to 1, and line x equal to 4y, and line x equal to 4. Region OAB is the region of integration. Region OAB is the region of integration. In the given order, we have to integrate first with respect to x and then with respect to y. दे रखे है, पहले x के रिस्पेक्ट में है ये, फिर y के रिस्पेक्ट. हमें चेंज ऑफ ऑर्डर करना है. आफ्टर चेंज ऑफ ऑर्डर we have to integrate first with respect to y and then with respect to x. After change of order, we have to integrate first with respect to y and then with respect to x. Divide region OAB into vertical strips. Divide कहता है region OAB into vertical strips. After change of order, we have to integrate first with respect to y and then with respect to x. After change of order, we have to integrate first with respect to y and then with respect to x. Divide region OAB into vertical strips. OAB region को divide region OAB into vertical strips. Each vertical strip starts from line y equal to 0 and ends on line y equal to x by 4. In the given order, we have to integrate first with respect to x and then with respect to y. OAB is the region of integration. In the given order, after change of order, we have to integrate first with respect to y and then with respect to x. Divide region OAB into vertical strips. Vertical strip में divide करें. पहले x है फिर y है, इसमें उल्टा करना y से x. Divide region OAB into vertical strips. Each vertical strip starts from line y equal to 0 and ends on line y equal to x by 4. After change of order, we have to integrate first with respect to y and then with respect to x. Divide region OAB into vertical strips. Each vertical strip starts from line y equal to 0 and ends on line y equal to x by 4. Divide region OAB into vertical strips. Each vertical strip starts from line y equal to 0 and ends on line y equal to x by 4.
Also these strips vary from x equal to 0 to x equal to 4. ये जो स्ट्रिप्स हैं वेरी कर रहे हैं फ्रॉम x equal to 0 to x equal to 4. x क्या 0 to 4 है और y की वेरिएशन क्या है 0 to x by 4. Starts from y equal to 0 and ends on line y equal to x by 4. x equal to 4y यानी y equal to x by 4. y equal to 0 से y equal to x by 4 ये तो ये रीज़न बन गया. ठीक. तो अब इसको कर लो आप. आफ्टर चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन वी हैव आई इक्वल इंटीग्रेशन x इक्वल टू 0 to 4 इंटीग्रेशन y इक्वल टू 0 to x by 4 e की पावर x स्क्वायर dy dx इंटीग्रेशन 0 to 4 e की पावर x स्क्वायर by 0 to x by 4 dx. इंटीग्रेशन 0 to 4 e की पावर x स्क्वायर x by 4 dx. इंटीग्रेशन लिमिट्स पुट करने के बाद पुट x स्क्वायर इक्वल टू t सो डैट 2x इंटू dx इक्वल टू dt. 2x dx इक्वल टू dt implies x इक्वल टू x dx इक्वल टू dt by 2. When x equal to 0, t equal to 0, and when x equal to 4, t equal to 16. जब x 0 है t 0 है and when x equal to 4 है t equal to 16 है. तो I क्या हो गया इंटीग्रल 0 से 16 e की पावर t dt बटे 8 e की पावर t बटे 8 0 से 16 इज इक्वल टू 1 बटे 8 e की पावर 16 माइनस e की पावर 0 1 बटे 8 e की पावर 16 माइनस 1. तो इवेल्यूएट इंटीग्रल 0 to 1 इंटीग्रल x स्क्वायर से 2 माइनस x y dy dx. चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन. and verify the result. let I बराबर है इंटीग्रल 0 to 1 इंटीग्रेशन x स्क्वायर से 2 माइनस x y dy dx. इंटीग्रल 0 to 1 x y स्क्वायर बाई 2 x स्क्वायर से 2 माइनस x dx. इंटीग्रल 0 to 1 x by 2 2 माइनस x का होल स्क्वायर माइनस x की 4 dx. इंटीग्रल 0 to 1 x by 2 4 माइनस 4x प्लस x स्क्वायर माइनस x की 4 dx. is equal to half इंटीग्रल 0 to 1 4x माइनस 4x स्क्वायर प्लस x क्यूब माइनस x की 5 dx is equal to half 2x स्क्वायर माइनस 4/3 x क्यूब प्लस x की 4/4 माइनस x की 6/6 0 to 1 हाफ 2 माइनस 4/3 प्लस 1/4 माइनस 1/6 9/24. चक्कर क्या है सो कहाँ चले गए यार तुम. एक मिनट भाई सब परला था चरला कहाँ से आ गया तेरे. यू आर नॉट इंटैक्ट. यहाँ आ गए थे. चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन या बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड माइंड चाहिए मैथ में.
ठीक। तो x/4 अब सब्सटीट्यूट करो, पुट x स्क्वायर इक्वल टू t, 2x dx dt, तो x dx dt बाई 2, वैन x इक्वल टू 0 t इक्वल टू 0 हो जाता है, वैन x इक्वल टू 4 है t इक्वल टू 16, तो आई इंटीग्रल 0 से 16 e की पावर t dt बाई 8, e की पावर t बटे 8, 0 से 16, तो 1/8 e की पावर 16 माइनस e की पावर 0 1 होता है, ये आ गया। नेक्स्ट आप क्वेश्चन अब देख, इवेल्युएट दिस, चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन एंड वेरीफाई द रिजल्ट। तो आई ये है आपका 0 to 1 एक्स स्क्वायर से 2 माइनस एक्स वाई डी वाई डी एक्स। तो पहले विद रिस्पेक्ट टू वाई किया आपने, ठीक, और फिर विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर दिया, तो 9/24 आ गया। अब आपने चेंज ऑफ द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन बाउंडेड बाई x इक्वल टू 0 to x इक्वल टू 1, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर से y इक्वल टू 2 माइनस एक्स, x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 1, ठीक, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर से y इक्वल टू 2 माइनस एक्स, y इक्वल टू 2 माइनस एक्स इज स्ट्रेट लाइन है भी। तो 1 x इक्वल टू 0 क्या है, ये y एक्सिस होता है, x इक्वल टू 1 क्या है, इज ए लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, x इक्वल टू 1 पैरेलल टू y एक्सिस है, एंड एट ए डिस्टेंस 1, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज एन अपवर्ड पैराबोलास हुज वर्टेक्स इज एट 0 0, ठीक, ओके। 2 माइनस एक्स इज स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट्स 0 to 1 1, ए कैपिटल A 1 1, 2 0, 2 0 y एक्सिस पे, the parabola y equal to x square, and the line y equal to 2 minus x intersect at the point 1 1. Therefore region OAB is the region of integration. In the given order, we have to integrate first with respect to y and then with respect to x. After change of order of integration, we have to integrate, पहले तो हमने y के रिस्पेक्ट में किया, फिर विद रिस्पेक्ट, अब हम चेंज करेंगे, we have to integrate first with respect to x and then with respect to y. Divide OAB into horizontal strips, अब इसमें हॉरिजेंटल स्ट्रिप्स में डिवाइड कर रहे हैं, एंड फॉर दिस वी डिवाइड OAB इनटू 2 पार्ट्स, OAM, देखो OAM एंड MAB, OAM एंड MAB। तो डिवाइड द रीजन OAB इनटू हॉरिजेंटल स्ट्रिप्स, एंड फॉर दिस वी डिवाइड रीजन OAB इनटू 2 parts, OAM and MAB. So in the region OAM, each horizontal strip starts from line x equal to 0 and ends on curve x equal to under pi. ठीक है, in region OAM, each horizontal strip starts from line x equal to 0 and ends on curve x equal to under root pi. In the region OAM, each horizontal strip starts from x equal to 0 and ends on curve x equal to under root pi. Also these strips vary from y equal to 0 to y equal to 1. In region OAM, each horizontal strip starts from line x equal to 0 and ends on curve y and ends on curve
x equal to 2 minus y. And ends on curve x equal to under root y. Also these strips vary from y equal to 0 to y equal to 1. In region NAB, each horizontal strip starts from line x equal to 0 and ends on line x equal to 2 minus y. Also these strips vary from y equal to 1 to y equal to 2. These strips vary from y equal to 1 to y equal to 2. Thus after change of order of integration we have y equal to 0 to y equal to 1 and x equal to 0 to under root y xy dx dy plus integral y equal to 1 to 2 x equal to 0 to 2 minus y xy dx dy. दो रीजन में हमने इसको ओ ए एम में y इक्वल टू 0 टू y इक्वल टू 1 x इक्वल टू 0 टू एंड्स ऑन द कर्व x इक्वल टू अंडर रूट y. ठीक. Also these strips vary from y equal to 0 to y equal to 1. In region MAB, each horizontal strip starts from x equal to 0 and ends on the line x equal to 2 minus y. Also these strips vary from y equal to 1 to y equal to 2. Thus after change of order of integration we have ये हो गया इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 y x square by 2 0 to under root 2 dy. इस इंटीग्रल 1 to 2 y x square by 2 0 to 2 minus y dy है. ठीक. और इसको पुट करो, सब्सटीट्यूट करो तो 9/24 आ गया विच वेरीफाई. उसमें 9/24 था, इसी में 9/24. ठीक. तो इस तरह से चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन करेंगे हम. And you can watch this online lecture on college YouTube channel www.bljscollege.com. Still if there is any difficulty you can contact me. Thanks. We will meet in the next lecture. Thank you.